Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. The chapter is 7, permutation and combination. We complete the two topics, counting, and second is notation and factorizations, right? तो आपने 7.2 एक exercise complete कर दी होगी, right? The concept of the video number 2, right? Based on this. Now in this video lectures permutations. Okay, we understand the permutations. Each of the arrangements which can be made by taking some or all of a number of things is called the permutations. This is simply the permutation, that means the permutation, that means the arrangement, right? Arrangement, right? Okay. So now see the one example 2. Okay, solve this. So example of this, write what is the permutations. So write down all write down all the permutations of the set of 3 letters. Letter A, comma B, and comma C, right? So each of the arrangements which can be made by taking some or all of a number, थोड़े या पूरे of the number things is called a number of things is called the permutations. Each of the arrangement which can be made by the taking some, यानी आप 5 में से 2, 5 में से 3, ऐसे कोई भी अरेंजमेंट ले सकते हो, राइट? नाउ सॉल्यूशन फॉर दिस, यहाँ पे ABC 3 letters. So simply the solution of this questions, understanding of this. So the permutations, the permutation of 3 letters ABC taking taking 2 at a time, R. चलो हम लोग बनाते ABC है ना, जो so taking 2 नहीं, taking all, all at a time. So एक ABC comma चलो ACB, right? अब B की बारी, BCA BAC, now CAB comma CBA, right? So there are the 6 combinations, yani there are the 6 permutations. Clear? So it is the permutations, right? Now here प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, राइट? सो नोटेशन, if
N and R positive integer such that one less than or equal to R less than or equal to N, then the number of all permutations of N। तो देखो यहाँ पे R है वो 1 और N के बीच में है, ओके, ऑफ N डिस्टिंक्ट थिंग्स। टेकन R एट अ टाइम, N में से R थिंग चूज आपको अरेंज करनी है। R एट अ टाइम is denoted by the symbol ओके क्या सिंबल है? NPR ऐसा, ओके, और NPR, right? NPR, okay. So this is the symbol of again this notations या permutations, understand? Okay. तो अगर नोटेशन में सिंपल है N and R the positive integers such that 1 less than R less than or equal to N. So the number of all permutations of the N distinct things taken R at a time. Okay. तो आपने इसको डिनोटेट कर दिया, right? Now अब एक्चुअल में NPR और द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ N डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन R एट अ टाइम। ओके, चलो अब आपने ये कर दिया सबसे पहले। सो NPR NR या फिर NPR is equal to N into N minus 1 into N minus 2. We also saw in the previous lectures. So N minus R minus 1. तो आपने वहां पे क्या लिखा था? N minus R plus 1, right? ओके ओके, फिर NPR का प्रूफ भी आपने देख लिया था। सो NPR इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था NPR का? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, राइट? ओके, नाउ थर्ड सबसे इम्पोर्टेंस, ओके, क्या था कि NPN इज इक्वल टू क्या होगा? N फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? N फैक्टोरियल, राइट? ओके, एंड चलो 4 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये भी एक इम्पोर्टेंस थिंग्स। ओके, कोई बात नहीं, चलो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ या सॉल्यूशन, राइट? मान लो कि P ऑफ
NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial, राइट? ओके, अब आपके पास तो क्या है, p ऑफ npn, ओके, सो n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। ओके, नाउ यहाँ पे आपने क्या कर दिया, r इज इक्वल टू n पुट कर दिया, राइट? तो npn मतलब n फैक्टोरियल हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो गया, implies that 0 factorial is equal to n factorial upon n factorial is equal to 1, right? तो नॉर्मली आपको क्या मिल गया, प्रूफ मिल गया, अंडरस्टैंड? ओके, चलो अब डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स के जो है वो आपके ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ कि मान लो कि टाइप 1 अभी, सो प्रॉब्लम based on upon the value, okay, of NPR, क्या है बच्चों, NPR, और या फिर उसको आप P of NPR ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? चलो, दैट मीन्स कैसे क्वेश्चंस होंगे, ओके? तो चलो फर्स्ट P ऑफ आपके पास है 15C3, राइट? अगर इसको लिखना चाहते हैं तो 15P3, तो बाय फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसको इवेल्यूट करना है, 15 इंटू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, सो 15 इंटू 14 इंटू 13, राइट? ओके, इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल तो है ही बच्चों आपके पास, आपने 12 फैक्टोरियल कट कर दिया, सो यू गॉट द आंसर, ओके, 2730, राइट? तो देखो 15P3, तो आपने क्या किया पता, 15 के 3 फैक्टर्स ले लिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो 15 के कंसेक्यूटिव डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर कितने हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13, यू गेट द सेम आंसर। तो इतना सारा दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके? नाउ नंबर 2, ओके, P, so that means 5P5, so 5P5 का मतलब क्या है बच्चों, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, 24 5 are 120, राइट? सो दिस इज द आंसर, राइट? ओके, चलो टाइप 2 देखते हैं, ये कैसे थे। अब टाइप 2 मैं टॉपिक वाइज जाऊंगा, एक्सरसाइज वाइज नहीं, ओके? टाइप 2 तो एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक की है बहुत इजी है, फर्स्ट सेकंड तो आपने देखा भी है, वो आपको करना है, ओके? चलो नंबर 2 हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट देख लिया था, सेकंड वीडियो में सेकंड। चलो ऑन फाइंडिंग, so on finding the value of required unknown when required unknown when a relation connecting NPR is given, so is given, right? तो चेक करते हैं ना इसमें क्या है। चलो एनसीईआरटी का ही हम सॉल्व करते हैं, ओके? सो द
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इफ P from 5 to R, 5 comma R is equal to 2 times P of 6 comma R minus 1, then find R. Okay, solution. So here the solutions is very simple. NPR बच्चों, तो NPR मतलब क्या है? 5 factorial upon 5 minus R factorial. Am I right? Okay. 2 into formula 6 factorial upon 6 minus R minus plus 1 factorial. Right? Okay. So 5 factorial upon 5 minus R factorial is equal to 2 into 6 into 5 factorial. Right? 6 factorial को मैं 6 into 5 factorial लिख सकता हूँ. Here 7 minus R factorial. Okay. Now 5 factorial cut. Okay. So 1 upon 5 minus R factorial is equal to, only you got 12 remaining term. 7 minus R. So 7 minus R factorial. Sorry. 7 minus यानी एक और less. तो 6 minus R and also 5 minus R factorial. यानी 4 है तो 4 into 3 into 2 factorial में लिख सकता हूँ. राइट? ओके. दोनों तरफ से 5 minus R factorial कट हो गया बच्चों, और ये वाला इस साइड पे आ गया, तो 7 minus R और 6 minus R. राइट? अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 12 है तो 12 के कंसेक्यूटिव फैक्टर्स 4 3s are. ओके. और कंपैरिजन बच्चों 7 माइनस आर. ओके. तो 7 माइनस आर कोई भी एक लेके कर सकते हो, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में. इम्प्लाइज दैट ओके आर इज इक्वल टू आर पॉजिटिव, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. आर कितना मिल गया? 3. अब फैक्टराइज नहीं करोगे, कैलकुलेशन कंसेक्यूटिव फैक्टर से कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा. चलो क्लियर? ओके. अब मैं आपको एन ढूंढने के लिए एक बताता हूँ. चलो, आपने इसमें क्या ढूंढा? आर ढूंढा. अब एन की बारी. ओके. बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करने में. इफ पी ओके NC4 राइट इज इक्वल टू, आपके पास कितना है? 20 राइट इनटू P N2 फाइंड N. क्या ढूंढना है आपको? N. कोई बात नहीं, चलो सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, तो हम लोग हिंट ले रहे, आपको पता चल जाएगा. तो NP है, तो यहाँ पे इस साइड पे N फैक्टोरियल N माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यू गॉट दी 20 मतलब है ही, सो 20 इंटू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R यानी 2 फैक्टोरियल. चलो क्या हो जाएगा? N फैक्टोरियल कट 1 अपॉन N माइनस 4 N माइनस 3 N माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 अपॉन N माइनस 2 फैक्टोरियल. दोनों तरफ से N माइनस 20 कट हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि वो अपॉन में ऊपर N फैक्टोरियल, इधर भी N फैक्टोरियल था तो हमने कट कर दिया. राइट? तो दोनों तरफ 1 अपॉन N माइनस 2 कट हो जाएगा. राइट? तो यहाँ पे N माइनस, एक तरफ N एक तरफ N, सो और 20. अंडरस्टैंड? सो 20 इंटू N माइनस 4 फैक्टोरियल. ओके 20 इंटू N माइनस 4 फैक्टोरियल यहाँ पे. तो N माइनस 4 एक फिर एक लेस, यहाँ पे गलत है, तो N माइनस है, तो मैंने यहाँ पे N माइनस 1 फैक्टोरियल कर दिया. इसको मैं अभी रब कर देता हूँ. इज इक्वल टू 20 अपॉन
n minus 2 factorial, right? So cross multiply, n minus 2 factorial is equal to 20 into n minus 4 factorial. So n minus 2, n minus 3, n minus 4 factorial is equal to 20 into n minus 4 factorial. So cancel, n minus 2 into n minus 3 is equal to 20. So again comparison, n minus 2 और n minus 3, तो ग्रेटर जो भी है वो आपको पता चल जाएगा. तो n minus 2, n minus 3 consecutive factor 5 4s are, so n minus 2 is equal to 5 comparison. So n is equal to how much? 7. तो एक ही फैक्टराइजेशन में आपको वैल्यू मिल जाएगी हियर. सो n इज इक्वल टू हमें मिल गया 7. चलो क्लियर. तो एक ये पैटर्न आपने देख ली इसके अंदर कि n भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है. ओके, फिर प्रॉब्लम सम्स आएंगे, प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस. ओके, तो वो भी हम लोग एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर देख लेंगे. ओके, अब परम्यूटेशन कौन से अलग अलग केस में पॉसिबल है. ओके, तो चलो ये थोड़ा बहुत है चेक करने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट परम्यूटेशंस. अंडर certain condition, certain condition, certain condition, right. ओके, मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ. चलो फर्स्ट याद रखना, याद रख द नंबर ऑफ okay, the number of all permutation all permutations of n different objects डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. याद रखना डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. ओके, टेकन आर एट अ taken are at a time when a particular object is to be always included in each arrangement. क्या होगा? इज r इंटू n माइनस 1 p r माइनस 1, राइट. सो नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है एंड हमें एक साथ r लेने हैं. तो r टेकन ओके, टेकन r एट अ टाइम. सो द परम्यूटेशन r इंटू n माइनस 1 p r माइनस 1 आप लिख सकते हो. चलो नंबर 2, सेकंड इंपॉर्टेंस पॉइंट. नॉर्मली ये पॉइंट्स आप इनडायरेक्टली सम के अंदर यूज करोगे. द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ the number of
the number of permutation of permutation of n distinct objects taken are at a time when particular object is never taken in each arrangement is each arrangement बोला है तो क्या आएगा n-1 PR क्या हो जाएगा डायरेक्टली n-1 PR उस बंदे को लेना नहीं है इसीलिए चलो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थर्ड वन द नंबर ऑफ permutation of n different objects and different objects taken are at a time in which two specific objects always occur together बहुत इसके क्वेश्चंस आते हैं always occur together is 2 into या फिर 2 है तो 2 फैक्टोरियल सपोज 3 थिंग्स है तो 3 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा सो r-1 into n-2 p r-2 राइट ये डायरेक्टली है अब बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो देन यू अंडरस्टैंड चलो क्लियर अब परम्यूटेशंस के लिए एक सिंपल पॉइंट जो बाकी है वो permutation of object all distinct नॉट ऑल डिस्टिंक्ट सब अलग अलग नहीं है तो क्या करोगे तो फर्स्ट पॉइंट the number of mutually the number of
mutually okay. This thing is disintegrable permutations right, okay, of n things, of n things taken all at a time, of which P are alike of one kind Q like second kind such that P plus Q is equal to n factorial upon P factorial into Q factorial, एक ही टाइप राइट। अब इससे ज्यादा है मान लो आपके पास, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन थिंग्स आर ओके, वहाँ P1 P2 P3 ऐसे अलग अलग काइंड के है ना, तो आप तब क्या कर सकते हो ओके। सो यहाँ पे जब आप ओके फॉर P1 P2 राइट अप टू मान लो कि आपके पास PR तक है ओके, तो इस टाइम के अंदर आप क्या करोगे n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल प्लस अप टू नाउ सून PR फैक्टोरियल, ऐसा इंडिकेट कर सकते हो ओके। तो नॉर्मली n फैक्टोरियल अगर दो ही है ओके, सिर्फ P और Q है ओके, सो आपने लिख दिया PNQ, the number of n things okay which P alike and Q alike okay kind and remaining all are distinct okay, remaining all are distinct अलग अलग है and okay remaining are distinct is equal to n factorial into P factorial into Q factorial right, बस इतना आपको याद रखना है ओके। this is all are the theory points of the permutations okay। So I think you already know that this, and then okay very easy to solve the exercise right, clear? So this is very easy to solve this exercise okay बच्चों। So we start the exercise in next video. Thank you for watching this video. तब तक के लिए till then and bye bye.